Namaste to everybody. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. As we come to the final session today, I'm really grateful, very privileged to be part of this panel, August panel that I am seated with today. It was wonderful to listen to everybody. I do know Hindi, but I think I'm going to talk a mixture of, Hindi and English. So I'm very grateful to have listened, and I'll spend the next 8 to 10 minutes talking about some of my research work and also some of the understandings that we got today during the two sessions, presented by our panelists. I think what I gazed today, was there are gross forms of Hindudvesha and also subtler forms of Hindudvesha. Attacking our body, attacking our mind, our psyche. And when I was listening, I classified it into sort of 5 different sections. The first one, obviously, is the physical attacks, the genocides that we have seen, whether in Kashmir, the ethnic cleansings in Bangladesh, whether we have seen it in Pakistan, the abduction of our girls in Pakistan, on a daily basis. We also see it in India. In India, this process is a womb jihad or a love jihad. I do research on this. I do documentation on this. And last year, in 2022, 45 girls were murdered by Muslim men who claimed to be their love. According to some other data that was gathered, which is a very conservative estimate, at least one girl is seduced in love jihad every week. And according to my research, every third week, 23rd day पे वो लड़की, उनमें से एक लड़की का एक निर्मम हत्या होती है, lethal, brutal killing. We have seen the case of Shraddha Talwarkar, where, the refrigerator case. We have seen the suitcase, body in a suitcase. We have seen Nikita Tomar being killed in broad daylight. This is the sort of Hindu dvesha that is blatant, it is visible. I think a lot of us have also seen it in the form of ethnocide, our conversions. Conversions एक ऐसा process है कि everybody is free to practice their religion की जो बात आती है, लेकिन when it comes to the simple tribals, not only are the tribals converted, but मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ. एज अ चाइल्ड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, आई यूज्ड टू डोनेट हाफ ऑफ माई पॉकेट मनी टू माई स्कूल पुअर बॉक्स, विच वाज सपोज टू हेल्प द ट्राइबल्स. मुझे नहीं पता था कि ये पैसा ट्राइबल्स को कन्वर्ट होने में जाता है, और जब बाद में मुझे पता चला ये कि जब ट्राइबल्स कन्वर्ट होते हैं, नॉट ओनली डू दे स्टार्ट breaking our idols. They break our idols, they break our temples, they are taught to hate Hinduism, but also उनको इंडिया के अगेंस्ट भी एक कोचिंग की जाती है. जैसे एमपी में मैं अभी जबुआ में गई थी, और वहाँ पे मैंने देखा था कि भील्स जो कन्वर्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हाइड सम ऑफ दैट आइडेंटिटी कि उनका कन्वर्जन हो चुका है, पर एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना भीलिस्तान का. तो ये एक ब्रेकिंग इंडिया फोर्स जब बनता है तो उसका कन्वर्जन से बहुत गहरा नाता होता है. तो ये भी एक हिंदू द्वेषा भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडिक आइडेंटिटी के अगेंस्ट भी खतरा है. तीसरा मैं पॉइंट जो आई थिंक विक्रम जी ने उठाया था कि कैसे हमारे सिंबल्स पे अटैक होता है. आइडल वर्शिप को, जैसे मूर्ति पूजन को गलत माना जाता है एब्राहमिक रिलीजन्स में, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कैसे स्वस्तिका को उन्होंने, हमारे स्वस्तिका को एक नाजी सिंबल के तौर पे जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब मैं इंडिया में थी तब मुझे ये इतना खटकता नहीं था, पर जब आप बाहर जाते हो, मैं यूएस में रहती हूँ, एंड इट बिकम्स अ डेली कंसर्न कि मैं अपने घर के बाहर स्वस्तिका सिंबल नहीं लगा सकती, जबकि यहाँ मैं रक्षाबंधन हो या कोई भी पूजा हो, रंगोली हो, स्वस्तिक ही बनाती हूँ मैं घर पे. तो ये कंसर्न हो गया था यूएस में, उसके अगेंस्ट अभी लेजिस्लेशंस आना शुरू हो गए थे. और अब तीसरा एक जो आई थिंक सम पीपल माइट हैव नोटिस्ड कि जो हमारा त्रिशूल है, वो स्वस्तिक भी एक
पेगन सिविलाइजेशन यूरोप ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटिव अमेरिकन्स के साथ भी जुड़ा हुआ है. उनकी पूजा में भी स्वस्तिक इस्तेमाल होता है. यूएस में जो नेटिव्स हैं, उस तरह से स्वस्तिक और जो त्रिशूल है, मुझे लगता है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं और उसको सेटन के साथ एसोसिएट किया जाता है, ट्राइडेंट. तो वो भी एक तरह से आज की तारीख में एक हिंदू सिविलाइजेशन ही प्रबल है और बचा हुआ है. तो ये दोनों भी सिमियोटिक्स की जो साइंस है, साइंस ऑफ सिंबल्स, इस किसी ने दाविंची कोड पढ़ी हो तो आई एम श्योर यू नो अबाउट इट. सिंबल्स आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी रिलीजन एंड ऑल्सो एनी, हर एक प्रतीक होता है एक. सो दैट इज़ आई फील अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिक्लेम. और वो कोशिश हमारी यूएस में जारी रहती है. वी आर फाइटिंग दैट ऑल द टाइम. Now we come to the subtler aspect, जब एक हमारे mental attacks जो होते हैं, जो academia में होते हैं, जिससे हमें एक हीन भावना का जो हम शिकार हो जाते हैं कि हमारी हिस्ट्री में हमें, ये सब तो सब जानते ही हैं कि ये जो एक प्रोसेस है टू शो कि Hindus are lower, they have never won a war, वो तो हम एक narrative change कर ही रहे हैं. आर्यन द्रविडियन थियोरी जब मैं देखती हूँ, तो मैं जब रेशियल थियोरीज देख रही थी तो सारी थियोरीज, पुरानी जो थियोरीज रेशियल थियोरीज हुआ करती थी, साइंटिफिक रेसिज्म, सब हैमेटिक हाइपोथेसिस, सब अब बैन हो चुकी हैं. बट आर्यन द्रविडियन थियोरी, दे विल नेवर लेट इट गो. So these are all manifestations of Hindudvesha. I do see that as hitting on our mental psyche. हमारे बच्चों को इस तरह से इंग्रेन किया जाता है ताकि वो रूटलेस हो जाते हैं अपने रिलीजन में, अपनी फेथ में, हिंदुइज्म में इतना स्ट्रांगली उनको एक फीलिंग ऑफ प्राइड नहीं आती है. And they become atomized and they become part of, जैसे बोलते हैं cogs in the wheel, they become part of the broader Western civilization, helping build, their countries. जैसे कि हम लोग करते हैं, when we go abroad, we are building another civilization, another country's economy, right? लेकिन ये एक process है जो हम सीखते हैं. And we are also, अगर हम अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आज एक हिंदू जाग रहा है, देयर इज़ अ पॉलिटिकल पावर हियर दैट सपोर्ट्स इन इंडिक आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी. तो आप लोगों ने किसने डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है जो यूएस में हुई थी? लॉट ऑफ पीपल, राइट? बिकॉज ये एक वर्ल्ड ओवर पता चल गया था कि 9/11 जिस दिन अमेरिका पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था ड्यू टू रैडिकल इस्लाम, on that very day they were holding a conference talking about dismantling global हिंदुत्व, और हिंदुत्व को डिफाइन किया था एज अ फाशिस्ट, नाजी, जो भी उनके मतलब हार्ड कोर वर्ड्स हैं, कू क्लक्स क्लैन, एवरीथिंग. एंड आई डिड अ सेंटिमेंट एनालिसिस. मैं एक डेटा एनालिटिक्स का प्रोफेशन है मेरा, एंड मैंने उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स को लेके DGHC, उसको हम प्यार से उसे DGHC कहते हैं, डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस को. बट व्हेन आई डिड एन एनालिसिस ऑफ इट, व्हाट आई फाउंड वाज दैट they were deeply concerned obviously about Hindutva, and what they were concerned about was how we are defining ourselves. So when we are defining ourselves against what they want to define, जैसे कि आदिवासी को RSS calls them वनवासी, that वो उन्हें बहुत खटकता है, right? तो the Vanavasis have started worshipping Ram instead of Ravan, Durga instead of Mahishasur. वो उनकी बहुत बड़ी एक समस्या हो गई थी. तो वो जिस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, वो प्रोसेस जब हम तोड़ते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी को खुद निखारते हैं, that process for them is Hindutva, and that process is what they hate. The second very important finding from that was that Hindutva, according to their definition, is when the caste calculus fails, when the caste division fail in India, whether in elections, या जैसे कि मैंने अभी आदिवासी का एग्जाम्पल दिया, नॉर्थ ईस्ट में जो एक संगठित हो रहा है हिंदू, तो
that, according to them, is Hindutva, and it is absolutely anti-caste. So no wonder, because the caste calculus is failing in India, that the caste issue is being raised all over the world, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आप जहाँ भी देखोगे कास्ट के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, पॉलिसी आ रही है, हम उसे ऑन अ डे टू डे बेसिस फाइट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. And that is why the caste dilution, I just want to end with some notes here. जो एक caste identity है उसे dissolve करना एक हमारा उत्तरदायित्व है, because it is a colonial concept. दलित, caste और आदिवासी तीनों शब्द ब्रिटिश रूल के दौरान आए थे हमारे ऊपर, और ना ये जाति से रिलेटेड है, ना हमारे वर्ण से रिलेटेड है, ना कुल से रिलेटेड है. तो इसीलिए वो हमें we have to make, a strong movement to dissolve that caste identity in the United States, and I think it is happening. जैसे कि caste, Negro word जो है वो caste से निकलता है, in peninsular Spain और Portugal, वहाँ पे जो classifications होते थे वो caste होती थी. उसी word को लेके उन्होंने इंडिया में उसे चिपकाया है हमारे आइडेंटिटी पे, एंड वहाँ पे तो उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया है. वहाँ कोई बात नहीं करता है कास्ट की. स्पेन में, पोर्चुगल में या यूएस में, नीग्रो इज कॉल्ड द एन वर्ड. नोबडी सेज इट. Caste is the N word of the Hindus. We have to just dissolve it, is our goal in the United States. When I come to the last point, कि हम हिंदू द्वेषा से लड़ना तो ज़रूरी है. To fight it is very important. I think Madhuji and Nupurji and everybody has stated that very clearly, that we have to fight this. But from an academic standpoint, we also have to build the dharmic narrative. जैसे कि मुझे लगता है कि two things are really missing. जैसे the entire Western civilization, if we have to solutionize it from a dharmic angle, Western civilization is built on just artha and kama. जो धर्म और मोक्ष है, जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, वो कहीं ना कहीं खो गए हैं. और if we have to define a new way of working, it has to be by bringing जो एक हमारी लकीर लंबी करनी, वही हमारा आई थिंक दायित्व है. बिकॉज वी ब्रिंग सो मच टू द टेबल. हालांकि एब्राहमिक फोर्सेस, जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, दे ट्राई टू सप्रेस अस, बट जो आम नागरिक है, चाहे यूरोप में हो चाहे यूएस में हो, they love the Hindu concepts, the spiritual concepts of Hinduism. And ये शायद एक तरह से हमारा उत्तरदायित्व है कि हिंदू द्वेष को ख़त्म करना है, तो हिंदू धर्म का जो प्रचार है, जो उसकी तरफ प्रेम है, उसे और उजागर करना है by spreading that message. तो बस मैं उतना ही कहना चाहूँगी. The last point I can only say is कि the देवी, जो देवी सो रही हैं बाकी सारी दुनिया में, हमारे यहाँ पे वो आफ्टर दिस नवरात्रि, ये last wish or last hope that I have is that the Devi has to wake up also around the world, and the feminine forces. So with that, I want to end this, and thank you everyone for listening to me. Namaste.